हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर द भी। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कैसे सर्वे फॉर्म बना सकते हैं यूजिंग HTML। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो चले आइए आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ कौन सा सर्वे पेज। हमने अगली वीडियो में सर्वे फॉर्म बनाया था, ये है हमारा सर्वे पेज। ये आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आज की वीडियो में हम ये सर्वे पेज बनाने जा रहे हैं यूजिंग HTML। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ से आप 10 तक वाई नॉट बट ओनली कैटोस ओनली डॉग, ये तो आप देखते हैं नॉन लाइब्रेरी यूज chunky dogs or dang dogs, or you can see it name you can write any. Okay, so it is my server page. So let's start the video. First of all, I will open my survey page, choose another app, save, and now I will erase that style, erase that. Now HTML, here we can write survey page, enter, header, enter. And now here we can go enter main, enter div id should be div title, h1 id title, h1 should be survey page, enter p id description, and here we can write like. So I will copy the paragraph. You can write any paragraph. So I will copy in the paragraph. This is my paragraph. So I will copy it and paste it. So now telegram work is done. Then save, then refresh. So here you can see telegram work is done. Also telegram work is done. So enter div id, div form, enter form id, survey form, enter label for name, your name, and here we can write enter input type should be text, and here we can erase it. id should be name should be name, and placeholder name goes here. Required should be my, here we can required, and here we can write like br, and now enter, and enter and br, enter. Here we can write label for number, and here we can write how many photos you want to receive, and telegram is done. So now enter, and here we can write input type should be number, and we can erase it, and here we can write id should be number, and here we can write name should be number, here we can write min should be 1, and here we can write max 10, here we can write placeholder should be 1, and telegram is done 1 to 10. Sorry.
1 to 10. And here we can write required, and here we can write like br, and here we can enter, then again enter. And now here we can press S, and here we can write label, enter label. Label should be for drop down. Do you want to see chunky doggos? And here we can write or hack dang catos. And here we can write br, and now till it is done, then enter. Then here we can write select I should be drop down, enter. Name drop down, and here we can write enter option value cats only catos. Enter option value will be dogs only doggos. Option value about. हमारा जब इतना हो गया था, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने इतना लिख लिया था, आप देख सकते हैं जैसे अब इतना हमने लिख दिया था, अब आपको यहाँ पे आके लिख देना है सिलेक्टेड पे आपको लिख लेना है यहाँ पे जैसे के वाई नॉट बोथ, एंड यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, एक स्लैश लगा लेता हूँ और एक ये बस। और जब आपका इतना हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट और br, तो यहाँ पे आपको फिर एंटर दबाना है, एंटर, फिर आपको br टैग, फिर एंटर। लेबल आपको दे देना है फॉर रेडियो आपको दे देना है। पहले सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो आप ये लिख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है, इतना ही हमारा आना था, तो आप ये लिख सकते हैं why not bot। सो आपको रेडियो में लिख देना है you are br, अब यहाँ पे br टैग लगा दिया, एंटर। इनपुट आपको दे देना है रेडियो, आईडी आपको दे देनी है मेल, नेम आपको दे देना है जेंडर, वैल्यू मेल, एंटर, लेबल फॉर मेल एंड मेल, एंटर, input type should be radio, ID मैं दे देता हूँ ID, अब मैं ID दूंगा फीमेल रेडियो, यहाँ पे आपको लिख देना है नेम, जेंडर, इधर आपको आगे जाके लिख देना है वैल्यू फीमेल। और जब आपका इतना हो गया तो एंटर, फिर लेबल आपको दे देना है, लेबल में आपको टाइप दे देना है, लेबल में आपको टाइप नहीं, यहाँ पे आपको फॉर दे देना है, फॉर में आपको लिखना है फीमेल
यहाँ पे आपको लिख देना है फीमेल, इधर आपको लिख देना है BR, एंटर, इनपुट टाइप रेडियो, अब यहाँ पे आपने इसे हटाया, फिर आईडी दी, फिर आपको आईडी दे देनी है, आईडी इस बार हम लोग दे देते हैं अदर, एंटर, अब यहाँ पे आपको नेम देना है जेंडर, फिर आपको आगे जाना है, वैल्यू आपको दे देनी है अदर, एंटर, लेबल आपको दे देना है फॉर अदर नॉन बाइनरी, एंटर, BR टैग, एंटर। तो जब आपका इतना हो गया, अब ये देख सकते हैं सब कुछ हमारा हो चुका है। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से सेव किया, रिफ्रेश, तो आप भी देख सकते हैं ये सब हमारा आ चुका है, फीमेल नॉन, और यहाँ पे आप 1 to 10 आपके पास ये भी आ चुका है। अब हमें सिर्फ CSS में स्टाइल करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, स्टाइल लिखता हूँ, एंटर, अब हमें स्टाइल दो CSS के कोड लिखने हैं, बॉडी आपको में टेक्स्ट अलाइन शुड बी सेंटर, फॉन्ट फैमिली आपको दे देना है जैसे कि मोंसीरत, कॉमा सैंस सेरिफ, फॉन्ट वेट बोल्ड, एंटर, हाइट ऑटो, विड्थ ऑटो, एंटर, मार्जिन टॉप 30 pixels, enter, margin right, enter, auto, enter, margin bottom, auto, margin left, auto, enter, position, flex, enter, justify content should be center, enter, form, enter, display, inline, block, enter, margin should be 20 pixels and 20 pixels auto, 20 pixels auto, enter, H1 should be font family, should be Montserrat, comma sans serif, and here save, then refresh, so here you can see it, till here my work is done, enter, and footer, enter, font family, Montserrat, comma sans serif, enter, margin 30 pixels, auto, enter, background color white, enter. So till my work is done. So now here we can write like hashtag title, margin auto, here we can write 20 pixels auto, enter, hashtag description, and here we can write edit, enter, margin auto, and here we can write 20 pixels auto, enter, footer, license, and here we can write margin bottom 10 pixels, and footer, margin top pixels, enter, HR, enter, height 3 pixels, background color, hashtag 1F, enter, and here we can enter, drop down, margin top 7 pixels, enter, save, refresh, so here you can see it, till here my work is all done, but I will go here and enter, and
and enter, and here you can write div title, enter, border should be solid, enter, border radius 7 pixels, enter, border width 30 pixels, background color /tag 1f 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 and 1f. Okay, and enter, and here we can write margin should be auto 30%, auto 30%, and his color is one F and 1F. Okay, and here we can enter. Sorry, it is border color. And now tell him how to get done, and here we can write background color hashtag 1F 1F 1F. Color should be white. Save, refresh. So here you can see it. Easily it is built, but how many photos to receive is not gap. यहाँ पे गैप नहीं है इसके बीच में. हाउ मेनी फोटोज और इसके, सो मैं गैप दे देता हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ. and here save, refresh. तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ. यहाँ पे refresh, how many photos do you receive? You receive save, then go, then refresh. No, it is all done. It is done. So here you can see it. It is done. It is built it. Here you can see it. And 1, 2, 3, and you can go snap. So it is my survey page I will build. And I hope you can enjoy this class. Enjoy, like my video, share, friends, subscribe to my channel for today. Goodbye.